Assalamualaikum. I am Ikra from dar-e-arqum school. Students, hope you will be fine. Now we start our first lesson, reading of English. An action point. An action point contains many actions. In this point, we learn many actions. Pat the red pot. Pat the red pot. First, we underline the pat. It means hit. That means hit. Do you see the pot in this picture? Yeah, this is the pot in this picture. Circle this pot and hit like this. Pat the red pot. In this line, pat is an action word. Next, spin the below toe. Spin the below toe. In this line, spin is an action word. Spin means move. Do you see a toe in this picture? This toe spins like this. Next, take a little step. Take a little step. Underline word take. Take means have. Next, bow to me. In this line, bow is an action word. Underline it. Do you see a girl in this picture? What is doing? What is she doing? She is doing bow to us. Start. Next, hold the black cat. Hold the black cat. In this line, hold is an action word. Hold means catch. स्टूडेंट, जैसे आप एक बॉल को कैच करते हैं, इसलिए ये देखिए कैट है और इसको कैच करना है, ठीक है। बॉल है, आपने देखा क्रिकेट में जब क्रिकेट खेली जा रही होती है तो जब बैट से बॉल को हिट किया जाता है तो उसको कैच करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। पेट द वाइट डॉग. पेट द वाइट डॉग. अंडरलाइन द वर्ड पेट. पेट मीन्स stroke. Pet the white dog. In this line, pet is an action word. Do you see a dog in this picture? Yes, this is a dog in this picture. Take a little step. Take a little step. In this line, take is an action word. Next, bow to him. Bow means, underline word, bow. Bow means bend. Bow to him. In this line, bow is an action word. Catch a butterfly. In this line, catch is an action word. Underline this word. Catch means hold. पकड़ना. Catch a butterfly. Do you see a butterfly in this picture? Yes, this is the butterfly. Chase a rainbow. Chase a rainbow. In this picture, chase. Chase is an action word. Chase means follow, go away. Follow or go away. When you see the rainbow after the rain, yeah, this is rainbow. It's having 7 colors. After raining, it shows on the sky. Take a little step. Take a little step. Take means have. In this line, take is an action word. Now next line,
Bow to her. Bow to her. Bow means bend. Underline the word bow. In this line, bow is an action word. Do you see a girl in this picture? She showed us an action bow. Clap your little hands. Clap your little hands. Underline the word clap. Clap means strike hands. This line shows clap is an action word. We perform action like this. This is clapping. Smile a happy smile. Smile a happy smile. In this line, first of all, we underline word smile. Okay? Smile like this. Smile is an action word. Take a big step. Take a big step. Underline the word take. Next, bow to us. In this line, bow is an action word. Underline this word. Start. Students, now open your workbook page number 2. Now we do writing word. Our first question is my word was. Prepare your own word was of the difficult words of the poem and learn them. B-O-W, bow. Our first word is bow. B-O-W, bow. Students, repeat it with me. B-O-W, bow. Next, rainbow. R-A-I-N, rain. B-O-W, bow. Rainbow. R-A-I-N, rain. B-O-W, bow. Rainbow. Our next word is clap. C-L-A-P, clap. C-L-A-P, clap. बेटे जैसा कि आप जानते हैं क्लैपिंग हम लोग कैसे करते हैं, जब हम लोगों को खुश होते हैं या कोई हमारे साथ कोई अच्छा वाक़या पेश आता है या बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हम लोग क्लैपिंग करते हैं, तो हम लोग ये एक्शन परफॉर्म करते हैं. तो हम लोगों ने अपनी पोएम में भी पढ़ा क्लैप योर लिटिल हैंड्स. ओके. स्माइल. S-M-I-L-E, स्माइल. हम लोग स्माइल कैसे करते हैं बच्चों? जस्ट लाइक स्माइल. Now we repeat all these words. Bow. B-O-W, bow. Rainbow. R-A-I-N, rain. B-O-W, bow. Rainbow. Clap. C-L-A-P, clap. Smile. S-M-I-L-E, smile. Spin. बेटे जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, स्पिन का मीन है मूव करना. तो हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा है स्पिन द बिलू टॉप. हमने ऐसे स्पिन करते हैं बिलू टॉप. ठीक है. स्पिन. S-P-I-N, स्पिन. आवर नेक्स्ट वर्ड इज टो. T-O-P, टो. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेप. S-T-E-P, स्टेप. S-T-E-P, स्टेप. स्टूडेंट्स, अब हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे. अगर आप लोग इसको मेरे साथ साथ रीड करेंगे तो आपको ये पढ़ने में आसानी होगी. B-O-W, bow. Rainbow. Clap. Smile. Spin. Toe. Step.
Now move to next page, page number. Next thing, write words that end with at, add, eg, read. बेटे अब हम लोगों ने 2 ऐसे वर्ड राइट करने हैं जिनके एंड पे at आता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें बताया है कि rat रेड, इसके एंड पे at आ रहा है। अब हम लोगों ने 2 ऐसे वर्ड लिखने हैं जिनके एंड पे at आ रहा हो, जैसे set, बेटे इसके एंड पे at आ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको यहाँ पे राइट किया है। नेक्स्ट वर्ड होगा eat। अब हम लोग इन दोनों में से कोई एक वर्ड लेंगे और एक सेंटेंस राइट करेंगे यहाँ पे, जैसा कि दिस इज द फैट वन, दिस इज a fat one। Alphabetize, fish around and place the word from the word found in alphabetical order on the line to the right hand। बताइए हमारे पास फॉर्म है, फिश फॉर्म, इसमें वर्ड हैं जिनको हम लोगों ने अल्फाबेटाइज अरेंज करना है। ठीक है, तो बेटा अल्फाबेट्स में हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड जो आता है वो है ए बी। आप लोगों को ABC आती है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको राइट करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो हम जब इसको पेट, स्पिन, बाउ, होल्ड, लिटिल, वाइट, बटरफ्लाई, चेज, रेनबो, क्लैप, टेल, बेटा इनमें से कोई भी वर्ड ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अब हम लोग देखेंगे क्या बी से स्टार्ट हो रहा है, पेट, स्पिन, बाउ, तो यहाँ पे बी से वर्ड आ रहा है, तो इसको हम लोग इधर राइट करेंगे। फर्स्ट वर्ड हम लोग कैपिटल राइट करेंगे, बाउ। नेक्स्ट बी के बाद क्या आता है, सी। हम देखेंगे कि सी के साथ कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, पेट, स्पिन, बाउ, होल्ड, लिटिल, वाइट, बटरफ्लाई, चेज, रेनबो, क्लैप, टेल। बेटे अब इधर सी से 2 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, चेज, क्लैप। चेज हम लोग फर्स्ट वर्ड जो लिखेंगे वो चेज लिखेंगे। हम लोग चेज क्यों लिखेंगे, क्लैप पहले क्यों नहीं लिखेंगे, हम लोग चेज इसलिए पहले लिखेंगे बेटा अल्फाबेट्स में ए पहले आता है और एल बाद में आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग चेज राइट करेंगे, CHASE। देन वी राइट क्लैप, CLAP। रिपीट students, repeat with me, our first word is bow, case, clap। बेटा केस में हम लोगों ने केस फर्स्ट क्यों राइट किया है और क्लैप बाद में क्यों राइट किया है, इसकी रीजन ये है दोनों तो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका फर्स्ट वर्ड तो सी है, लेकिन आपने ये देखा है केस के बाद ए क्या आ रहा है, ये अल्फाबेट्स में ये पहले आता है और एल बाद में आता है, इसलिए हम लोगों ने पहले चेज राइट किया और फिर हम लोगों ने क्लैप राइट किया। आवर नेक्स्ट वर्ड, अब हम लोगों ने सी के बाद क्या आता है, डी। अब हम लोग अपने इक्वेशन में देखेंगे कि क्या यहाँ पे डी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, पेट, स्पिन, बाउ, होल्ड, लिटिल, वाइट, बटरफ्लाई, चेज, रेनबो, क्लैप, टेल। बेटे नेक्स्ट आवर वर्ड है ए से स्टार्ट हो रहा है, होल्ड।
अब हम देखेंगे इसके बाद हमारे पास कौन सा अल्फाबेट्स आ रहा है। इसके बाद हमारे पास जी आ रहा है, हम देखेंगे जी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है। पेट, स्पिन, बो, होल्ड, लिटिल, वाइट, टेक, चेस, रेनबो, क्लैप। इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो जी से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा लिटिल। जी, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एल के बाद क्या आता है। तो एल के बाद हम लोग देखेंगे पी आता है, तो हम यहाँ पे पेट राइट करेंगे। आफ्टर दिस वी राइट रेनबो। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा वर्ड हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है एस पी। स्पिन के बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है पे। लास्ट वर्ड वाई। Now students, open workbook page number 4. Match the word with exact picture. बेटा इसमें हम लोग इन वर्ड को इन एग्जैक्ट के साथ पिक्चर के साथ मैच करेंगे। पैट, इसमें क्या आ रही है देखिए बेटा, ये डॉग के साथ खेल है, तो ये क्या है, ये डॉग को मार रहा है, ठीक है, इसलिए ये पैट, तो इसके साथ मैच कर देंगे। स्पिन, ये टॉप है, ये स्पिन कर रहा है, इसके साथ मैच करेंगे। चेस, ठीक है, ये बॉय चेस कर रहा है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। स्टेप, दीज आर स्टेप्स, तो वी मैच देम। क्लैप, देखिए ये देखिए हैंड, इनसे वो क्लैपिंग कर रहा है, तो हम लोग इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट कैच आ बटरफ्लाई, तो देखिए ये बटरफ्लाई को कैच कर रहे हैं, हम इनको मैच कर देंगे। हमारी मैचिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एनिमल्स मेंशन्ड इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट में जो जो थिंग्स और एनिमल्स मेंशन है हम उनके नेम लिखेंगे। Now we make a list of things mentioned in this point. Pot, P-O-T, pot. Next, top, T-O-P, top. प्यारे बच्चों, हम लोग इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेनबो, R-E-I and rain, B-O-W, bow, rainbow. Next we write, make a list of 3 animals mentioned in this point. Dog, D-O-G, dog. C-A-T, cat. Butterfly, B-U-T-T-E-R, butter. F-L-Y, butterfly. This is our students. Now read your lesson at home and watch this video carefully. Allah Hafiz.